Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, वी हैव अ सुपर से भी ऊपर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप एंड आवर टेलीग्राम ग्रुप is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे मोटिवेशन करती है, आप लोगों से इंटरैक्ट करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. Right? उसको प्लीज Vedantu_Biotonic उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. सो किड्स, वी आर बैक अगेन विद अनदर सुपर अमेजिंग सेशन ऑफ mnemonics. In this session also we'll try and give you the maximum possible information in minimum possible time, especially focusing on all the things which become really difficult for anyone to remember. Yes, chalo, so let's rock the session. Let's move forward. So let's start Biobomb Animal Kingdom Part 2. Look at this amazing mnemonic. क्या है आज का mnemonic? Amar Akbar Anthony went to Bombay and had lots of Swiss roll with cute Pokemon. I repeat, Amar Akbar Anthony went to Bombay. देखो मैंने हाईलाइट क्या किया है. Amar Akbar Anthony went to Bombay and had lots of Swiss roll with cute Pokemon. So Amar Akbar Anthony, examples of arthropoda. Arthropoda is very important. Examples at least 10 to 15 times MCQ में आए हैं. At least 10 to 15 times. Right? So Amar Akbar Anthony, Apis, Anopheles, Anthony aegis. Yes, Apis, Anopheles aegis, Bombax maury, Lots Lacifer, Lots Locusta, Lots Limulus, Crab, Limulus, Scorpion, Swiss roll, right, with cute Pokemon, cute Culex, Pokemon prawn. So it's a very simple mnemonic to remember all the examples of arthropoda. सारे के सारे example. How many of you are enjoying? Have fun. Do this. How many of you? Yes, सारे arthropoda याद रखने का बहुत easy तरीका है. Amar Akbar Anthony, Apis, Anopheles, Aedes went to Bombay, Bombax, lots, Lacifer, Locusta, Limulus, lots, Lacifer, Limulus, Locusta, Swiss, Scorpion, cute, Culex, Pokemon, prawn. Very easy way to remember arthropoda. Next, phylum mollusca. ये देखिए सारा Apis, Anopheles, Aedes, Culex, prawn, Lacifer, lac insect. Locusta, it is an insect which eats all the crops, very much damaging to the fields. Limulus, king crab, MCQ, scorpion, Bombax maury, silkworm.
So next one, phylum Mollusca, the shelled ones. So see, Pinctada, MCQ question, Pinctada, pearls. Sepia, it puts ink in the eyes of the predators, cuttlefish. Octopus, devilfish. Loligo is a squid, again very important. Look at the animations. Look at the animations. Pila, apple snail, I'm going to talk about it. Very important, apple snail. Aplysia, sea hare. Chaetoplura, chitons, and Dentalium is tusk shell. इस एक slide से, only from this slides you can have direct MCQ questions, only from this slide. So फिर से octopus देखेंगे, आप पहले चाय पी लो. So mollusca में octopus आएगा, very easy to remember. फिर से octopus देखेंगे, आप पहले चाय पी लो. वेदांतु definitely is the temple of knowledge. फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप पहले चाय पी लो. फिर से पिंकटाडा सीपिया, ऑक्टोपस देखेंगे, डेंटेलियम, आप एप्लीसिया, चाय पी लो, पी लो, पी लो, पी लो. पीला लॉलिगो, चाय, काइटोप्लूरा. फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप पहले चाय पी लो. सो सिंपल. न्यूमोनिक्स के बाद चाय पी लेना, ठीक है. लेट्स मूव अहेड. फाइलम Echinodermata. So you have Echinus sea urchin, Antedon sea lily. Ophiura has come in MCQs at least 6 to 7 times. Brittle star, Asteria starfish, Cucumeria sea cucumber. So like Eklavya, Arjun is a champion of archery. Like Eklavya, Arjun is a champion of archery. Eklavya Arjun, champion of archery. Eklavya Arjun, champion of archery. Echinus Arjun, Antedon, champion. Cucumaria of archery. Ophiuria, Asterias. Very simple. Like Eklavya, Arjun is a champion of archery. Hemichordata, Balanoglossus, Saccoglossus, Balanoglossus, Saccoglossus. Hemichordata, born smart. Vedans are born smart. Balanoglossus, Saccoglossus, born smart. Balanoglossus, Saccoglossus. Right, everybody? Phylum Chordata, subphylum Urochordata. Always shine like diamond. You have to study hard and you have to always shine like a diamond. Always shine like diamond. Acidia, Salpa, Doliolum. Acidia, Salpa, Doliolum. Acidia, Salpa, Doliolum. Always shine like a diamond. Acidiaceae, Salpa and Doliolum. Can you see them? They are all part of chordata, urochordates. They look like a tunic, like a cover. Tunic, very simple. So that finishes an amazing lecture of mnemonics. I would want to revise it. Chordata, urochordata, tunicata, always shine like diamond. Acidia, Salpa, Doliolum. Next one. Hemichordata, half chordates, Balanoglossus, Saccoglossus, born smart. Like Eklavya, Arjun is a champion of archery. Echinus, Arjun, Antedon, champion of archery. COA, Cucumeria, Ophiuria, Asterias. फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय पी लो. पिंकटाडा, सीपिया, ऑक्टोपस देखेंगे. डेंटेलियम, आप चाय पी लो. पीलिया लॉलिगो, आप चाय. एप्लीसिया, क्यूटोप्लूरा. राइट. एंड एक और कौन सा था? अमर अकबर एंथनी वेंट टू बॉम्बे एंड हैड लॉट्स, 3 लॉट्स हैं, एंड लॉट्स ऑफ स्विस रोल विद क्यूट पोकेमॉन. So Apis, Anopheles, Aedes, Bombus, Laccifer, Locustar, Limulus, Scorpion, Culex and Prawn. That's about it for today. Done. But we have to end our super cool classes with Biopanthi. Right? Are you ready for Biopanthi with cute Garfield? So Biopanthi question is, a red blood cell walked into a busy restaurant. SpongeBob ji answer karenge hamare liye. So a red blood cell walked into a busy restaurant. The hostess asked, would you like to sit at the bar? What did the red blood cell say? क्या कहा red blood cell ने? When she said, would you want to sit at the bar? The reds replied, no thanks, I'll just circulate.
No cells, no. No thanks, I will just, how sweet, no? He said, no, thank you so much, I'm just going to circulate. I'm a red blood cell. Look at SpongeBob going mad. Yes, so with that we come to the end of another super amazing, super cool, absolutely amazing mnemonic part 2. We are going to continue with mnemonic part 3 in the next class. Bye bachcho, take care and make sure that this mnemonic video goes viral. Bye bye, take care.